Hello everyone. So I'll explain you the syllabus of the immunology first. Here, first of all, we will see immunity, its definition and classification. So immunity means the capability or the capacity of the body to fight against the particular antigen or defend our body from that particular antigen or any foreign substance and prevent our body to fall ill or prevent from the disease. So this is the immunity, and it is classified into two types, basically innate immunity and the acquired immunity. So innate immunity is present by birth in the body, while the acquired immunity is specified by the contact of antigen. जैसे एंटीजन आएगा, जिस टाइप का वो एंटीजन होगा उस टाइप के हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, दैट इज द acquired immunity. Then second one is the formation of blood cells, which is called as hematopoiesis, this process. And then we know that there are different type of the blood cells, like erythrocytes, lymphocytes, monocytes, granulocytes. These all cells are formed by the particular processes. So these erythrocytic, myelocytic, then monocytic and lymphocytic lineages and differentiation processes we will study in this credit. Other than that, lymphocyte types and subsets. Now lymphocyte are the WBC types, like majorly three types of lymphocytes are there: T cell lymphocyte, B cell lymphocytes, and the natural killer cell. And they also have some subsets which we are going to study in this credit. Then third one is the organs of immune system. Now they are categorized into two types: primary lymphoid organs and the secondary lymphoid organ. These all are the parts of immune system. Like these parts are these organs are responsible for the formation of the immune cells. They are trained to fight against the antigen or generate the immune response. In the primary lymphoid organs, like thymus and bursa we are going to study, these are the major organs जो खुद जो है वो इम्यून सेल्स को फॉर्म करेंगे. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का नाम ही सेकेंडरी है, इसलिए वो काम भी सेकेंडरी ही करने वाले हैं. वो फर्स्ट जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है उनको हेल्प करेंगे टू लाइक एक्टिवेट दोज इम्यून सेल्स. जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो इम्यून सेल को फॉर्म करेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको एक्टिवेट करेंगे. Then in the secondary lymphoid organ we are going to see the structure and function of the spleen and lymph node, mucus associated lymphoid tissue, response of secondary lymphoid organs to antigen, lymphatic system and the lymph circulation. So this is all we are going to study in the organs of immune system. After that we are going to see in the fourth credit innate immunity. So innate immunity is not present by birth, it is non-specific type of immunity. So when antigen जो है हमारे body के contact में आता है, then it has to undergo the two line of defenses. The first line of defense contains फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल बैरियर्स. फिजिकल में आएगा स्किन, हेयर, ऐसे कोई पार्ट्स. देन केमिकल विल हैव सलाइवा और गैस्ट्रिक जूसेस. देन बायोलॉजिकल बैरियर्स मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली हमारे स्किन या बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं, दे विल ऑल्सो एक्ट एज अ डिफेंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. इन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ह्यूमरल कॉम्पोनेंट्स आर देयर. ह्यूमरल कॉम्पोनेंट्स माने वो जो बॉडी फ्लूइड में रहते हैं. ह्यूमर इटसेल्फ मीन्स कि वो कॉम्पोनेंट जो लिक्विड में या फिर जो भी बॉडी फ्लूइड है उसमें रहते हैं. देन दे आर डिफेंसेस, देन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन, देन देर आर पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स, complement, kinase, acute phase reactant. These are all the humoral components. Then we will see cellular components like phagocytotic cells, PMNL, which stands for polymorphonuclear leukocytes. Then macrophages, which are part of the reticulo endothelial cell system, and dendritic cell. So these are all parts of the cellular components. Then we will see the function of this humoral component and cellular component, how they undergo phagocytosis, which are of two types like oxygen dependent and independent. Then complement activation, which is classical, alternative and lectin pathway, which is carried out using these three pathways. And then third one is the coagulation system, which will help in the clotting of blood whenever the injury will happen. And then inflammation. Now inflammation, how our body will come to know about that the inflammation is happen, which is cardiac signs. Then mediators, how the signal will be passed. Then vascular and cellular changes, what changes will take place after the inflammation, and what is the role of toll like receptor in all this inflammation process.
So this is all about the innate immunity. Then in the 5th credit, we are going to see the antigen. So antigen, basically it is a foreign substance which will cross these all barriers and then enter in our body, and which will lead to the disease. So the antigen, here we will see the concept and factors affecting immunogenicity. Now what is immunogenicity? When antigen जब हमारे बॉडी में आएगा, उसके अगेंस्ट कितना इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करती है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी. या फिर वो एंटीजन हमारे बॉडी में कितना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है. सो नाउ after that we are going to see antigenic determinants like heptens and cross reactivity carriers adjoint. They are all the they are all the parts of the antigens. Like antigenic determinants मतलब जो एंटीजन पे जो कोई लाइक इपिटोप मतलब जो भी पार्ट्स रहते हैं जिसको हमारी बॉडी या हमारे एंटीबॉडीज़ जो है वो डिटेक्ट करेंगे, दीज आर कॉल्ड एज दी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स. हेप्टेन जो है वो काइंड ऑफ कैरियर मॉलिक्यूलर प्रोटीन हम कह सकते हैं. उनको कोई लाइक दे नीड अ सपोर्ट और दे नीड एक्सटर्नल प्रोटीन और समथिंग टू एक्टिवेट. वो अपने आप एक्टिवेट नहीं कर सकते इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में. देन क्रॉस रिएक्टिविटी, देन कैरियर्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ द हेप्टेन्स ओनली. देन एडजुवेंट्स आर लाइक मतलब ये सब जो है वो एक एंटीजन जैसे ही है. एंटीजन अगर हमारे बॉडी में आए तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, बट अगर एंटीजन को कोई सपोर्ट लगे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में, देन दिस थिंग्स आर यूज्ड. Then after that we will see the types of antigens like thymus dependent and thymus independent. Then there is synthetic antigen which is like synthesized outside inside the lab, not it is generated in the body. Then soluble and particulate antigen according to the like physical features of the antigen. And then auto antigens, then iso antigens. These are all the like types of the antigen. Then we will see in the 6th credit immunoglobulins. So the immunoglobulins are they are also kind of the antibodies only. There are 5 types of the immunoglobulins: IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. So this immunoglobulin का हम basic structure देखने वाले हैं. What are their chemical and biological properties? Then their characteristics, उनका structure कैसे है, उनमें क्या क्या parts है, heavy chain, light chain. देन उसका मॉलिक्यूलर बेसिस भी हम देखने वाले कि वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे जैसे उनका डीएनए या जो भी उनका स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर बेसिस पे वो कैसा है वो भी हम इन डिटेल में देखने वाले. देन आफ्टर दैट इन द 7th क्रेडिट देयर इज अगेन एडेप्टिव एंड द acquired immunity in detail. So it is also called as the third line of defense. Then here we will see the humoral immune response. So इसमें हम देखेंगे कि how they work, हाउ दिस ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें कौन से सेल पार्ट करते हैं वो कैसे वर्क करता है. दिस आर ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस क्रेडिट. सो प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स काइनेटिक्स, देन सिग्निफिकेंस इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, how this humoral immunity or humoral immune response can be used in the vaccination process we are going to study here. After that antigen processing and the presentation. So antigen ऐसे बॉडी में आया, देन उसको कैसे एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगा, देन उसके साथ जो है वो एंटीबॉडी बाइंड होकर क्या उस पर एक्शन लेगा, फाइगोसाइटोसिस करेगा या कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट करेगा, वो सब इसके अंडर आता है. एंड देन वी विल ऑल्सो सी द सेल इंटरेक्शन and the adhesion molecule, how this all processes undergoes in the humoral immune response we are going to study in the 7th credit. So this is all about the immunology 1. Thank you.